करेंसी रिस्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही हम लोग यहाँ पे समझते हैं. It is a form of the financial risk that arises from the change in the price of one currency against another. यानी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है या जहां से आपको रिसीवेबल है वो करेंसी डिप्रीशिएट होगा तो आपके लिए नुकसान है. Whenever the investors or the companies having assets or the business operation across national borders, they face a currency risk or foreign exchange risk. For example, if at all you are a US investor and you have stocks in Canada, the return that you will realize is affected by both change in the price of the stock, change in the value of the Canadian dollar against US dollar. यानी कि आपको वो स्टॉक में से क्या रिटर्न मिला वो तो कंसीडर करने का ही है भाई, पर साथ साथ में आपको क्या देखना पड़ेगा दैट वेदर डॉलर करेंसी एप्रिशिएट्स और डिप्रिशिएट्स, उसके बेसिस से आपका ओवरऑल रिटर्न डिसाइड होता है. सो इफ यू रियलाइज 15% रिटर्न इन योर कैनेडियन स्टॉक but the Canadian dollar depreciates at the rate of 15% against the US dollar, there is no gain at all.